Text number 34, 35, 36. Ishasya keshan vidurambuvahan vasastu sandhyam purvaryabhunaha avyaktamāhu hridayam manasya sachandrama sarva vikara koshaha. This is text number 34. O best amongst the Kurus, the clouds which carry water are the hairs on his head. The terminators of days or nights are his dress, and the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. Vijnana Shaktim Mahimamananti Sarvatmanonta Karanam Giritram Ashwashwata Yushta Gajanakhani Sarve Mragaha Pashvaha Shnoni Deshe. The principle of matter, Mahatattva, is the consciousness of the omnipresent Lord as asserted by the experts. And Rudradev is his ego. The horse, mule, camel, elephant are his males, and wild animals and all quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. Now text number 36 is purport. Vayansi tatvakaranam vichitram manurmanisha manujo nivasaha gandharva vidya dharcharanapsaraha swarismratir surani paviryaha. What to word translation? What to word meaning? Translation purport by Srila Prabhupada. Word to word translation. Vayamsi, varieties of words. Tadyakaranam, vocables. Vichitram, artistic. Manuhu, the father of mankind. Manisha, thoughts. Manujaha, mankind, son of Manu. Nivasaha, residence. Gandharva, the human being named Gandharvas. Vidyadhara, the Vidyadharas. Charana, the Charanas. Apsaraha, the angel. Swara, musical rhythm. Smritaha, remembrance. Asur Anika, the demoniac soldiers. Viryaha, prowess. Translation. Varieties of words are indications of his masterful artistic sense. Manu, of father of mankind, is the emblem of his standard intelligence. And humanity is his residence. The celestial species of human being, like the Gandharvas, Vidyadharas, Charanas, and angels, all represent his musical rhythm. And the demoniac soldiers are representation of his wonderful prowess. Purport. The aesthetic sense of the Lord is manifested in the artistic, colorful creation of varieties of birds like the peacock, parrot, and cuckoo. The celestial species of human being like the Gandharvas and Vidyadharas can sing wonderfully and can entice even the minds of the heavenly demigods. Their musical rhythms represents the musical sense of the Lord. How then can he be impersonal? His musical taste, artistic sense, and standard intelligence, which is never fallible, are different signs of his supreme personality. The Manu Samhita is the standard law book for humanity, and every human being is meant for God realization and association with God. This life is a chance for the conditioned soul to regain his eternal God consciousness and thus fulfill the mission of life. Maharaj Prahlad is the right type of representative of the Lord, the family of Asuras. None of the living being is away from the Lord's gigantic body. Each and everyone has a particular duty in relation to the supreme body. Disruption in the matter of discharging the specific duty assigned to each and every living being is the cause of disharmony between one living being and another. But when the relation
is re-established in relation with the Supreme Lord, there is complete unity between all living beings, even up to the limit of the wild animals and human society. Lord Chaitanya Mahaprabhu displayed this living unity in the jungle of Madhya Pradesh, where even the tigers, elephants, and many other ferocious animals perfectly cooperated in glorifying the Supreme Lord. That is the way to peace and amity all over the world. The gigantic form of Lord Sukadeva Goswami is describing. Why he is describing? Because we know the second canto, the end of the first canto, the question was how a person can be delivered who is just about to die. So gradually, Sukadeva Goswami is coming on the point. So in this chapter, the next upcoming 3 chapters is Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti, Saptati. These 3 aspects will be discussed. Because the question of Parikshit Maharaj was how to engage our mind and where to engage our mind. This was the question. Why this all description is coming here? This was the question, first question by Parikshit Maharaj. And second question was about the dharana. Yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana. So what description we are like is going on here? This is dharana. In the Ashtanga Yoga system, there is one concept dharana. Then dhyan, then samadhi. So what Sukadeva Goswami is describing dharana. And now how to reach from dharana to dhyan. So how to develop that dharana? There are 2 kinds of dharana. One is inside the body. Those were the yogis. Inside the body, they have perception that all the universe is situated inside your body. That is one kind of dharana. The dharana which Sukadeva Goswami is describing here, that Lord is situated everywhere in this universe. So that is what Sukadeva Goswami is describing here. So this was the question, and how someone can develop that dharana so he can remove all the anarthas which he has in his heart. Sara mail uska kaise chala jayega. These were the 2 questions, and these 2 questions are answered in this chapter. Now I think this is the second last shloka of this chapter. So Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti, Sapyate. There's a difference between Brahmavadi and Mayavadi. Brahmavadi, they accept the Supreme Personality of Godhead and they don't consider that we will become God. While they are attached for the impersonal aspect of Lord. So the description is for the Brahmavadis. Like Shukadeva Goswami is considered as a Brahmavadi before he heard the Bhagavatam. At the same time, Chatus Kumaras, they are also considered as a Brahmavadi. And by the mercy of Lord, they became the devotee of Lord. So, Brahma Anubhuti, iski charcha yahan ho rahi hai. And how can we correlate between Brahma Anubhuti, Brahma realization, the devotional service? That is also discussed here. Due to Srila Prabhupada. See, the beauty of Srila Prabhupada is whatever description is there. But Srila Prabhupada, so emphatically, he correlate those things with Krishna consciousness, that we people, we conditioned soul, we fallen soul, can understand the gist of that understanding. So that's why through purport of Srila Prabhupada, even we go through the Brahma understanding, which is explained by Shukadeva Goswami, still we can learn the aspect of bhakti through these Brahma aspect. Now the question comes, why Parikshit Maharaj is asking about this form of Lord, and why Sukadeva Goswami is describing? Because already we know Parikshit Maharaj already has darshan of Sri Krishna, so he was completely convinced for the personal aspect of Lord. And what is the need to tell Parikshit about this impersonal aspect or the Vishwarupa? So, you know, like answer of this question, because this is the regular answer, that Parikshit is asking for people who are for those
for whom it's very difficult to understand the personal aspect of God. So for them, Parikshit Maharaj is asking this question. As Gita says, Avajananti mam mudha manushim tanumashita param bhavam ajananto anubhutam ishwar. So those who are the less intelligent people, sometimes in questions, some devotees, they will ask some questions, not for themselves, for others. So the same case is here also. Parikshit is asking not for himself, for others. Parikshit is asking this question because personally he was completely convinced and he was situated on the devotional platform. So in the beginning, see, this point is very important. In the beginning, how to concentrate our mind on Lord in the beginning. So exactly this Brahma Vishwarupa is for the beginners, those who are less intelligent and those who cannot focus on the personal aspect of Lord. For them, this Vishwarupa is there. And I think in some of the purport in the same chapter, Prabhupada has written that a pure devotee of Lord, they don't want to see this materialistic form of Lord. Pure devotee, they don't want to see this form. So this Vishwarupa has two aspects. The first aspect is for the atheistic people. This Vishwarupa is challenging to atheistic people that yes, you have to believe. Like Prabhupada writes in a purport, we see in the tribal areas, people are worshipping either some tree or some mountain or some animal. So naturally, they have this belief system to worship someone. And when this kind of Vishwarup is gigantic form is described in the scriptures, so for those kind of people, it's become very easy to correlate how can they worship the Supreme Personality of Godhead. So that's the one thing. The second thing is, so this is challenge for the atheist. At the same time, this is mercy for the asuras, demonic people. How this is mercy for the demonic people? Because we know, Narada, Vyas, all these great saints, all these great devotees have already described about the personal aspect of Lord. In the recent past, Madhvacharya, Nimbarkacharya, Vishnu Swami, they have discussed about the personal aspect of Lord. Still, there are people, they don't accept or they don't follow the personal aspect of Lord. So those people are considered here as a asura, as a demonic people, because they are denying the form of Lord. So for them, this is the mercy of Lord. Okay, you don't want to realize the transcendental form of mind. Okay, then go through this natural understanding what you are seeing in this world. So as we know, how to see the God. So it's difficult to see God face to face, but through this gigantic form, someone, or like those who don't have much faith on Lord, at least they can gradually grow in the path of Krishna consciousness. So this is what the purpose why Sukadeva Goswami is describing this Vishwarupa, why Parikshit Maharaj has asked this question, and how it is beneficial for the asuras and for the Nastika. So this is the understanding behind this Vishwarupa, why this Vishwarupa is describing. Now in this today's text, today's purport, the same thing, because spiritual world is full of varieties, and this is the just a resemblance of the spiritual world. So this material world is also full of varieties, although limited but full of varieties. So
the things which has been discussed in this purport, two aspects of Lord, Saundarya Bodh and Sangeet Bodh. The second part of Bhakti Rasamrita Sindhu, these two things has been discussed properly. If you want to read much about this Saundarya Bodh and Sangeet Bodh, you can prefer the second Tarang, second wave of Bhakti Rasamrita Sindhu, where these things has been discussed more emphatically and more clearly. So what is this Saundarya Bodh? Saundarya Bodh means artistic, colorful creation of varieties of birds like peacock, parrot, and goose. That is the Saundarya Bodh of Lord. We know about the Rasa. Rasa has been explained by different acharya in a different way, but as we follow Srila Prabhupada, so Srila Prabhupada translate this in English as a mellow. And we know about the 5 primary rasas, from Shanta to Madhurya Ras. But devotees has considered 12 rasas. So how this artistic sense, this comes under these 12 rasas. So colorful creation of varieties of birds like parrot, peacock. These, like when someone see peacock, he become blissful. And you know how this peacock has this kind of feather. It's a story in the Ramayana, Uttarakanda. This is the boon of Indra to peacock. Because once Ravan was going, and these 3 demigods, Indra, Varun, and Yamraj, they were doing some sacrifice. So they became fearful by Ravana, and then they hide themselves. And when Ravan went from there, these 3 demigods assumed 3 forms. Indra took the form of peacock, and Yamraj took the form of crow, and Varun Dev took the form of lizard. So these 3 demigods has given boon to these 3 creatures. Like peacock, this peacock, the color of this peacock is coming from Indra. And lizard has this boon that you can change your color. And crow has been crow has this boon that Yamraj told, if anyone will offer food to you, it will reach to my abode. So that's why we offer foodstuffs to crow in the Pitra Paksha. So the description is the Uttarakanda of Ramayana. Saundarya Bodh. And then it comes a Sangeet Bodh. Second part. The celestial species of human being like the Gandharvas, the Vidyadharas can give wonderfully and can entice even the minds of the heavenly demigods. The musical rhythm represents the musical sense of the Lord. And how, so see, this is one of the extra kala of Lord Krishna, that is Venu Madhurya. Lord Krishna has 4 kala which is not present in any of the incarnation of the Lord. And one of that is Venu Madhurya. So this Venu Madhurya represents the Sangeet Bodh of Lord. Sangeet Bodh. We all know music, like music is also divine. This is the part of Samaveda. Samaveda, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. 7 Sadas and Gandhar, Pancham, all these. And celestial species like Vidyadhara, Charan, they usually sing. What they sing, that's a different aspect. People are singing here for the pleasure of materialistic people, but they are singing there for the pleasure of maybe the demigods or maybe for to please the Lord. So all these techniques are there. Whatever we are following, as we see the Krishna book, there are more than, I think, 64 kalas, 64 art. If someone has visited Ujjain, there is Gurukul, Sandipani Muni's Gurukul. And there they have presented all these 64 kalas, which
Krishna mastered only in 64 days. So one of them is Sangeet Bodh. Under the Saundari Bodh, like how to decorate the hairs of someone, how to do this, rangoli. These all comes under the Saundari Bodh. So these 64 kalas, out of these 64 kalas, approx 25 kalas comes under the Saundari Bodh and Sangeet Bodh. So this is the part of artistry which Krishna has learned. See, Krishna is already learned, but in this material world, he has shown the example, and he has learned in the Gurukul of Sandipani in the Avantika. Now the question comes: if Lord has such a wonderful Saundari Bodh, Sangeet Bodh, then how Lord can have impersonal? And that's why Gopis tell to Uddhav. Gopi says, "Oh Uddhav, please keep this impersonal Brahman, what Sukadeva Goswami is describing here, with yourself." Why? Because this impersonal Brahman cannot thief our butter. This impersonal Brahman cannot lift our Govardhan. This impersonal Brahman cannot dance with us. So when we talk about the mellows, what has been discussed here, Saundarya and Sangeet, this is only possible with a personal aspect of Lord. So now we can see how gradually Shukdev Goswami is moving towards the Supreme Personality of God, the personal aspect, which he will discuss in the third chapter. And these are the symptoms of the Supreme Personality: music, art, और कहते हैं कभी ना विफल होने वाली बुद्धि. Musical demoniac soldiers, purport, Prabhupada writes, which is never fallible. Standard intelligence is never fallible. A different science of his Supreme Personality. Now Krishna, in this shloka, Shukdev Goswami says, humanity is his residence. So humanity is connected with the Manu. That's why Prabhupada writes about Manu here, about the Manu Samhita. So Manu Samhita, when we talk about the humanity, there are two aspects of humanity. One is the Manu Samhita. Why Manu Samhita? Because Manu Samhita is full with the instructions for the human being. So one aspect to being a human is following the Manu Samhita. Why Manu Samhita following? Because it is designed for the Isha Sakshatkar, for the God realization. These are two aspects. See, Manu Samhita has been misrepresented in such a way that people criticize it. No one of us has been gone through the Manu Samhita. Manu himself writes in the Manu Samhita, the group of devotees, the group of people who are the knower of dharma, if it is needed, they can change in the Manu Samhita. So Manu Samhita is kind of, like code of conduct, or it's a kind of, if I say, Indian IPC. If there is some changes are needed, then those changes can be made in the Manu Samhita. Why people criticize Manu Samhita? Because the criticism is due to the purpose of life. The instructions which has been given in the Manu Samhita, those instructions are for the self-realization for the human being. People who are criticizing the Manu Samhita because the lifestyle which they have, the purpose what they have in their life, that is only the bhoga, the enjoyment. But Manu Samhita keeps a lot of restrictions on the human being, because those restrictions are favorable for the God realization. So that's why people criticize this Manu Samhita. The simple thing, East criticize West and West criticize East. Why they criticize each other? The reason is because one is the Bhoga Paddhati, the second is the Yoga Paddhati. The people who are following the Yoga, they will criticize people who are following the Bhoga. People who are following Bhoga, they will criticize Yoga. So this is a simple understanding. That's why how to develop the spirit of cooperation, that is also has been discussed, and how the peace can come in this world
and what is the you can say root of unity, that has been also discussed. So these things has been discussed in this shloka. So today we have discussed why Sukadeva Goswami is describing this universal form, what questions Parikshit Maharaj has asked, the concept of Brahmavad, difference between Brahmavad and Nirvisheshvad, and these different both Sangeet Bodh, Kala Bodh, how they are connected, and how gradually Sukadeva Goswami is leading the listener of Śrīmad-Bhāgavatam from Virat root to the personal aspect of Lord, and how this gigantic form of Lord is challenging for the atheistic people. At the same time, this is the mercy for the demonic people. So these are something which has been focused by Srila Prabhupada in this purport. Very difficult to understand because this gigantic form, sometimes beyond our imagination. So what I heard from devotees, I just try to explain this purport. Thank you very much. So if anyone has any question, please ask. Hare Krishna. Dhira Shanta Prabhu, we have still time. Like I told that you can continue till 35 minutes your lecture complete. So you can continue, or it's up to you. Like okay, if some question is there, then I can take it. Otherwise, I can continue for 4-5 minutes. Yeah, that is fine. No problem. Hare Krishna. If any devotee has a question, you can go ahead and you can unmute your mic and ask, or you can type in the comment box. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, it's not related to today's topic, but it related to the practical life actually. Actually, people generally say that we believe in Krishna, but we don't believe the concept of ISKCON. And they are not accepting. Sorry if I'm. It's people's reply. And Chaitanya Mahaprabhu, they say that who knows, Chaitanya Mahaprabhu का किसी भी वेदों में, किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, ये ISKCON का खुद का है और ये सब चीजें तो एंड तो ये प्रभु जी हम उसको आंसर नहीं दे पा रहे, और वो भी बहुत क्लोज वन लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं. हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसके विषय में कहते हैं दो प्रकार की श्रद्धा है, एक है लौकिक श्रद्धा और एक है शास्त्रिक श्रद्धा. लौकिक श्रद्धा सामान्यतः जो हम दादा दादी से सुनते हुए आ रहे हैं उस पर आधारित होती है, समाज में जो परंपराएं चल रही हैं उन पर आधारित होती है. और शास्त्रिक श्रद्धा जो होती है आधारित, वो आधारित होती है शास्त्रों के प्रमाण के ऊपर. अभी आपका प्रश्न था कि लोग कहते हैं वी फॉलो कृष्णा बट वी डोंट फॉलो ISKCON. ठीक है, आप कृष्णा को फॉलो करते हैं, कोई बात नहीं है. तो आपको ISKCON, वी डोंट फॉलो ISKCON, लेकिन ISKCON कोई बात मन से तो नहीं कह रहा है. यदि ISKCON हरिनाम के विषय में कह रहा है तो कोई भी संत महात्मा दूसरे संप्रदाय के हों, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में, भगवान के नाम के विषय में कहते हैं, भागवत के विषय में वो भी कहते हैं, भगवत गीता के विषय में वो भी कहते हैं. तो ISKCON कुछ अलग से कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि हम ISKCON को फॉलो नहीं करते. यदि वो पहले से किसी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, बात अलग है. लेकिन यदि न्यूट्रलिटी के साथ सोचें तो ISKCON वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और जो शास्त्र प्रमाण है उसके अलावा कुछ नहीं पता है. तो ऐसे लोगों को उत्तर यदि देना है, उनको समझाना है, तो एकमात्र प्रमाण है शास्त्र श्रद्धा. यदि हम उनको प्रेरित कर सकें कि देखिए शास्त्र श्रद्धा क्या होती है, उसके हिसाब से उनको समझाया जा सकता है. यही एकमात्र कर रहे हैं. जैसे कुछ दिन पहले घटना है, एक लंदन से एक माता जी आई, उन्होंने मुझसे कहा ओम नमः शिवाय. मैंने कह दिया ओम नमः शिवाय, तो वो बोले हमारी तो भाभी जी हैं और उनसे ओम नमः शिवाय कहते हैं तो ओम नमः शिवाय नहीं कहती. और देन शी वाज ब्लेमिंग टू ISKCON. तो मैंने उनको समझाया माता जी ऐसा, ओम नमः शिवाय कहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ओम नमः शिवाय और हरे कृष्णा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं. ओम नमः शिवाय और हरे कृष्णा में अंतर है और इसके लिए हमें शास्त्र से समझना पड़ेगा. जब मैंने उनको समझाया तो वो समझ गई. लौकिक श्रद्धा और शास्त्रिक श्रद्धा, इसके भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार शास्त्रिक श्रद्धा के माध्यम से ऐसे लोगों को समझाएंगे, उनको समझ में आएगा नहीं
इस्कॉन को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको फॉलो करना नहीं करना फॉलो वो आपके ऊपर है, लेकिन इस्कॉन में एटलीस्ट जो हो रहा है वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं, ये चीज हमें उनको क्लियर करनी, वो फॉलो करें या फॉलो ना करें, एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज चैतन्य महाप्रभु के संबंध में आती है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं, इसके तीन चीजें इसमें हैं। पहली चीज है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, चूंकि प्रच्छन्न अवतार के रूप में आए हैं इसलिए उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई। अब भगवान होने का प्रमाण दो प्रमाण होते हैं, उनके कार्य होते हैं और दूसरा शास्त्र प्रमाण होता है। हम में से कितने लोगों ने शास्त्र पूरे पूरे पढ़े हैं? ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़े। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वहां पे लगभग 15 से 16 रेफरेंसेस दिए गए हैं जो यही स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। और वायु पुराण न इस्कॉन ने लिखा है, न अग्नि पुराण इस्कॉन ने लिखा है, न महाभारत इस्कॉन ने लिखा है। ऐसे लोगों को जाके कहना चाहिए ये रेफरेंसेस हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुरी किताब में जाके चेक कर लो, आपको श्लोक मिल जाएगा वहां पे। तो ये एक तरीका है हमको बताने का। दूसरा एस्पेक्ट मैंने जो अपने गुरु महाराज से सुना था, महाराज कह रहे थे कि देखो यदि आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप मत करिए, लेकिन इस संसार के सारे लोग तो चैतन्य महाप्रभु को तो स्वीकार कम से कम करते हैं, सारे धर्म मत के लोग संत के रूप में स्वीकार करते हैं। सो accepting a person means accepting his instructions, accepting his knowledge, that is also the acceptance। तो यदि आपने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना है, कोई समस्या नहीं, आप उनकी शिक्षाओं को कह रहे हैं कि कृष्ण के नाम का जप करो, आप कृष्ण के नाम का जप करिए। वो कह रहे हैं आप श्रीमद्-भागवतम का आश्रय लीजिए, आप भागवतम का आश्रय लीजिए, इतना तो कर सकते हैं। जब आप नरसिंह मेहता को फॉलो कर सकते हैं, संत तुकाराम को फॉलो कर सकते हैं, रविदास कबीरदास को फॉलो कर सकते हैं, तो एक संत के रूप में चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने में क्या तकलीफ है? और यदि कोई व्यक्ति इतना भी स्वीकार कर ले, क्योंकि हमें भी चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास नहीं था, हम में से किसी को चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास नहीं था, लेकिन हमने उनकी शिक्षाओं का पालन किया, उनके जो भक्त हुए गोस्वामी, और अब हम समझ गए धीरे धीरे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो हमें भी समय लगा। तो यदि हम उनको इसके लिए मोटिवेट इंस्पायर कर सकते हैं कि एटलीस्ट यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और महाप्रभु की शिक्षा इतनी लॉजिकल है, इतनी साइंटिफिक है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है। हमको चौथा जो अपना न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे, ये प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपकी अहित भी भक्ति चाहता हूँ। तो अभी सारा संसार मोक्ष के पीछे पागल है, और महाप्रभु कह रहे हैं कि मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहिए। तो अभी इससे ऊंची फिलॉसफी आप बताइए कहाँ उपलब्ध? तो बेहतर है यदि आपने पर्सनालिटी में फेथ नहीं है तो हम फिलॉसफी डिस्कस करते हैं, फिलॉसफी चर्चा, तो ऐसे आप कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने देखा लोगों के अंदर इससे परिवर्तन आता है। जी, वो तो यही कहते हैं कि भगवान और मेरे बीच में किसी भी गुरु की और किसी की गुरु की आवश्यकता नहीं है। और जो चैतन्य महाप्रभु है, ये तो कहीं पे भी, आपने वायु पुराण और जो भी पुराण बताया प्रभु जी, एक बार आप दोबारा से बता देंगे जिसमें मेंशन है ये चीज? मैं आपको रेफरेंस चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2 चैप्टर, उसमें आप जाएंगे, मुझे लगता है शायद 8वें 10वें श्लोक में आपको सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगे, सारे रेफरेंसेस। आदि लीला 8 और 10 चैप्टर, सेकंड चैप्टर। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आज आपके में कहा कि म्यूजिक भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे डिवोटीज है बहुत सारे, वो म्यूजिक सुन के कहते हैं कि इससे भी हमारी भक्ति बढ़ रही है, और हर तरह की म्यूजिक सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि ये भगवान ही है, क्योंकि सारा म्यूजिक भगवान से ही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए। जो वेद के श्लोक हैं, साम वेद का हिस्सा है, और यदि वो कुछ प्रेयर्स हैं जिनकी रचना आचार्यों ने की है तो उनको सुन सकते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, मैं एक सिंपल चीज, एक छोटी सी स्टोरी को सुनाना चाहता हूँ कि व्यक्ति की कॉन्शियसनेस का कैसे फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति
जेल में भोजन बनाता था, वो किसी का रेप करके आया था, उसका भोजन खाने से वहां एक जेल में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके मन में दुर्विचार आ रहे थे। तो उन्होंने जेलर से जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति जो भोजन बना रहा है ना, ये एक क्राइम करके आया है। तो व्यक्ति जो लिखता है, व्यक्ति जो पढ़ता है, उसकी कॉन्शियसनेस का जो प्रभाव है वो सामने वाले के ऊपर पड़ता है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि कौन कौन से भजन सुन सकते हैं, तो आचार्य जो शुद्ध हैं, जो परंपरा में हैं, उनके भजन हम सुन सकते हैं। ये हमारी वफादारी शिला प्रभुपाद के लिए, हमारी गुरु शिष्य परंपरा के लिए। देखिए, यदि आप इस दृष्टिकोण से सोचेंगे कि हमें हमारे जो आचार्य हैं, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हों, चाहे हमारे गोस्वामी गण हों, इतने विपरीत परिस्थितियों में जब जब कन्वर्जन हो रहा था, जब मुस्लिमों का शासन था, ऐसी अवस्था में भी वो जो शुद्ध भक्ति है उसको हम तक लेके आ गए। तो अब बीइंग एज अ फॉलोअर ऑफ दीज गोस्वामीज, अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी ये जो शुद्ध भक्ति वो लेके आए हैं उसको हम आगे लेके जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी दूसरे भजन सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, इसमें होता क्या है, ये आज चूंकि रस तत्व की चर्चा है इसलिए बहुत अच्छा, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। आप सूरदास जी को सुनिए, आप दूसरे जो संत हैं उनके भजन सुनिए, और आप गौड़ी वैष्णवों के भजन सुनिए। देखिए, हम जो भक्ति कर रहे हैं, यदि आप रियली अचीव करना चाहते हैं कृष्ण, तब की बात हो रही। मजा मस्ती करना तो कोई बात नहीं, जिसको सुनना जो करना वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियली हम एक प्रॉपर एटीट्यूड, प्रॉपर मूड डेवलप करना चाहते हैं, तो सारे गौड़ी वैष्णव, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हों, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हों, उनके भजन में एक प्रॉपर मूड वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो मूड हमारी परंपरा को प्रस्तुत करता है, हमारे आचार्य को प्रस्तुत करता है। यदि हम सूरदास जी के भजन सुने, वो भी एक प्रॉपर परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मूड में एक छोटा सा अंतर दिखाई देता है। जो दैन्यता का भाव है, जो निवेदन का भाव है, वहां है, लेकिन उसकी वहां कमी है, दूसरे कहीं माधुर्य के भाव की दिखता हुई है। तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो रसाभास ना हो जाए, रस का रसाभास समझते हैं, मतलब रसगुल्ले में जो है बूंदी मिल गई है और उसमें थोड़ी सब्जी मिल गई, तो रसाभास, बूंदी है कि सब्जी है समझ में नहीं आ रहा, तो रसाभास ना हो जाए। और दूसरी, हमारी परंपरा की प्योरिटी कम ना हो जाए, या उसमें कोई मिक्सअप ना हो जाए। तो कम से कम हम जो इस्कॉन के भक्त हैं, गौड़ी वैष्णव हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परंपरा की शुद्धता को बनाएं और रसाभास से बचें। तो जो शास्त्र में कोई ऐसे स्रोत हैं, संस्कृत भाषा के स्रोत हैं, उनको आप सुने, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न लोग बना लेते हैं, आज ब्रज में होली है रसिया, और ये सब जो कोई शास्त्र के नहीं है, लोगों ने अपने म्यूजिक से कुछ बना लिया। तो एक चीज मान के चलिए, आप सुन लेंगे, लेकिन हम अल्टीमेटली सुन रहे हैं आध्यात्मिक विकास के लिए, आपको लग रहा है तो एकदम जो नीचे लेवल में उसके लिए ठीक है। लेकिन जो हमारे गौड़ी वैष्णव फिलॉसफी को समझे हैं, जिन्होंने गीता भागवत पढ़ रहे हैं गंभीरता से, उनके लिए सब टाइम पास जैसा लगता है। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप प्रभुपाद जी के लिए, गुरु परंपरा के लिए कितने कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और जैसे हम कहते हैं कि लोगों ने हमें आजादी दिलाई, लड़ाई झगड़ा करके हम उस आजादी का वैल्यू करना है, ऐसे हमारे गुरु वर्ग हमारे तक ये शुद्ध भक्ति लेके आए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें शुद्ध भक्ति को आगे लेके जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तो हमें वफादारी रखनी पड़ेगी अपनी परंपरा के प्रति। प्रभु जी, ये ठीक है श्याम चंद्र को जो बताया? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक बात करके खत्म करूंगा। माता जी ने गुरु के विषय में बात किया था, तो उनको भागवत, ये कनिष्ठ, ये कोई नए लोग नहीं है, ये कनिष्ठ लोगों का ऐसा लक्षण होता है, मैं और कृष्णा, उसके बीच में कोई नहीं चाहिए। फिर वही लौकिक श्रद्धा और कनिष्ठ भक्ति की बात आती है। तो कनिष्ठ को धीरे धीरे करिए कुछ उनके लिए उपाय, ताकि कम से कम मध्यम स्तर पर आए, धीरे धीरे आगे बढ़े। क्योंकि उत्तम का होता है, उत्तम भक्त का भाव होता है कि कृष्णा और मेरे बीच में हजारों वैष्णव पड़े हुए, गोपी पद कमलयोर दास दासान 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 दास, दासों का दासों का दासों का दास। और जो कनिष्ठ है उसका भाव है मैं और कृष्णा, उसके बीच में कोई नहीं चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, कम से कम एक आध व्यक्ति तो रखो, उसको गुरु कहते हैं। एक दो लोगों को, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु कम से कम रखना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप कृष्ण को मानते थे, कृष्ण की वाणी गीता है, गीता कहती तस्मात् गुरुम, उपनिषद कहता तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गीता कहती है कि आप विनम्रता से गुरु के पास जाइए, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। भागवत कहती है कि गुरु कर्णधारा, उस भक्ति रूपी नौका के चलाने वाले गुरु हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति मानना नहीं चाहता है तो बात अलग है, लेकिन यदि थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ी भी बुद्धि है,
तो शास्त्र तो उसको मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं मानना, ब्लेंटली उसको मना करना, तो फिर उसके लिए कोई समाधान नहीं। उसके लिए तो शास्त्र से काम नहीं, उसको शस्त्र से काम चलेगा, उसको डंडे से पिटाई करनी पड़ेगी जब उसको समझ में आए। ओके, हरे कृष्णा। अगर जिनके साथ जीवन ही बिताना हो, अगर वही ऐसी बात करेंगे तो हम ऐसे शस्त्र तो नहीं उठा सकते हाँ, तो ना। प्रेम में बहुत शक्ति है, प्रेम में बहुत शक्ति है। तो हमें फिर कैसे आचरण रखना पड़ेगा जिससे मतलब उनको ये लगे कि हाँ ये गलत जगह नहीं है, या ये सब चीजें हम कैसे हाँ, वो भगवान का करें? प्रसाद खिलाओ, और क्या है, अच्छे से प्रसाद खिलाओ, सेवा करो लोगों का। प्रभुपाद जी ने तो यही किया कि पीस के साथ में खूब बना बना के उनको प्रसाद खिलाया, खूब नृत्य करवाया। और ऐसे लोगों को परिवर्तित करने का एकमात्र तरीका हमारा व्यवहार ही होता है, वही उनको परिवर्तित कर सकता है। फिलॉसफी काम नहीं करेगी, फिलॉसफी काम नहीं करेगी, व्यवहार ही काम करेगी ऐसे, तो वही हमको बदल सकता है। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। और हमें अपने काम अनर्थों से भी बचना ही है, ताकि हमारा व्यवहार पे वो चीजें ना आए। बिल्कुल, श्यामचंद्र प्रभु हैं, उनके बस गाइडेंस में रहिए, सब जी आपको प्रभु जी, गाइड उनसे करते लेते रहते हैं नहीं, गाइडेंस। नहीं, बस बस बस। तो जी क्या होता है कि किन लोगों ने अपना मन बना लिया होता है ना, प्रभु जी वो 2002 में गए उन्होंने भी थे, अपना मैं मन अपने बना लिया फियांसे होता की बात कर रही हूँ है, प्रभु उनको जी। हम नहीं समझा सकते। प्रभु जी मैं, मेरे फियांसे हैं, मेरी अभी मैरिज फिक्स हुई है, तो मेरे फियांसे ही हैं वो 2002 में गए भी थे इस्कॉन। तो इस्कॉन में उनको एक अच्छा वाइब्रेशंस नहीं मिली, या फिर ये गुरु जो उन्होंने कहा होगा फोर्सफुली कि गुरु की पूजा करनी है, गुरु की पूजा करनी चाहिए, या ये सब चीजें, तो वो उसको उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए। हाँ वो ये कह रहे थे कि ठीक है भगवान का नाम लो, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरु को, अब कल अमोघ लीला प्रभु जी यहाँ पे देहरादून में आए थे, तो मैं वहां पे गई थी, तो पोस्टर में प्रभुपाद जी की ही फोटो थी और अमोघ लीला प्रभु जी की फोटो थी, कृष्णा नहीं थे वहां पे। तो उनको ये चीज बुरी लगी, कृष्णा भगवान को ही हटा दिया उन्होंने वहां से। तो भगवान की पूजा तो कर नहीं रहे हैं, बस उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज फिर मैं इस चीज का जस्टिफिकेशन इतना ज्यादा, उससे मैंने मतलब यही बोला कि मतलब आपने सुना कम है लोगों को, और ये सब चीजें हैं, तो वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। बाकी तो यही है व्यवहार में, और हमें फिर अपने ही उसमें चेंज करना पड़ेगा। बहुत टॉलरेंस चाहिए प्रभु जी, बहुत ज्यादा, फिर हाँ, अत्यधिक टॉलरेंस चाहिए। विचार करने के लिए बहुत धन्यवाद सेंसिटिव। प्रशांत, ठीक है प्रभु जी, प्रशांत थैंक यू प्रभु, सो मच। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हरे हृदय से। कृष्णा। तो हम सभी भक्तों को वरुण प्रभु, हरे कृष्णा, आप जी जी, कंटिन्यू। हरे कृष्णा। तो माता जी ग्रेजुअली हो जाता है, मेरी वाइफ भी ये फॉलो करती थी, तो नाउ शी इज कीपिंग एकादशी फर्स्ट, तो लेट्स सी। ओ ठीक है, ओके गुड। ओके, किसी और भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आई वांट टू शेयर माय रियलाइजेशन प्रभु जी। मैंने जो रियलाइज किया है कि पिछले 1-2 साल से मैं इस्कॉन के साथ एसोसिएट हुई हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो मैंने सीखा, मैं अभी उस पे नहीं, उतने लेवल पे नहीं पहुंची हूँ मैं किसी को कुछ सिखा सकूं। बट एक चीज है जो मैं करती हूँ, वो ये कि एक तो अपने लेवल पे जो प्रचार कर सकती हूँ, जो ठाकुर जी के कृष्ण के बारे में और भगवत गीता के बारे में जो बता सकती हूँ, वो मैं लोगों को बताती हूँ। प्लस मैंने अपने पास बहुत सारी भागवत गीता अपने पास रखी हुई है खरीद कर, और जहाँ मुझे कोई लगता है कि कोई मेरे से धर्म के बारे में या भागवत गीता के बारे में थोड़ी सी भी चर्चा करा और उसके मन में जरा से भी क्यूरियोसिटी है, मैं उसको उसी समय भागवत गीता उनको गिफ्ट कर देती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक कजिन है, द सो कॉल्ड वेरी मॉडर्न कजिन, लेकिन मुझे लगा कि उसके मन में कहीं थोड़ा बहुत है प्रभु जी ठाकुर जी के प्रति स्नेह, क्योंकि उन्होंने अपनी शॉप में ठाकुर जी, श्री राधा रानी और कृष्ण की मूर्ति लगा रखी है। मैंने उनको कुछ टाइम पहले भागवत गीता गिफ्ट की, एंड आई वॉज सो हैप्पी। लास्ट वीक जब मैं उनसे मिली तो उसने मुझे ये कहा कि दीदी मैंने भागवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया, आपने जो बुक दी है वो मैंने अपने मंदिर में रखी है, और जब मेरे मन में कुछ प्रश्न होता है मैं भागवत गीता उठाकर वो पढ़ती हूँ। और उसके बाद से मैंने एक एक श्लोक जो श्याम प्रभु जी हमें भेजते हैं वो मैंने उसको भेजना शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं किसी को कुछ
कुछ सिखा सकी। तो जो मुझे लगता है कि किसी को हम एकदम से इस राह में नहीं ले जा सकते, वो धीरे धीरे प्रयास अगर करेंगे तो हर कोई मतलब प्रभु का स्नेह ऐसा है कि कोई उसे अछूता नहीं रह सकता है, वो उनको उस पथ पे आना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एकदम माता जी ने अपना रियलाइजेशन शेयर किया है ना। बहुत अच्छा। जी, थैंक यू माता जी। तो अगर किसी अन्य भक्त का प्रश्न नहीं है तो वी विल ऑफर वैष्णव प्रणाम एंड कंक्लूड द सेशन। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, नाइस, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल।